Okay. So today we are going to start with database management system. Okay. So before we understand database management system DBMS, let's understand what is data. So what do you mean by data? Can anybody answer me? What do you mean by data? So, so, Sir, so Yes, data Stefan. is so while we sir, are using app or anything, the data is generated means our Oh, name, our ID, our all history The that is collection of been saved by information, database. okay. the collection of information, Correct. 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 A collection of raw information, raw facts and figures. Okay. Okay. So data is it's a raw form of information. Okay. Data means it's a raw form of information. Data is a raw form of information or collection of information. Okay. So as Aditya told, so data, I mean data को कोई बढ़िया, it can be data can be your name, can be your address, can be your bank account number, can be your vehicle number. Okay, can be anything can be treated as a data. Okay, but if I just show you this number, let's say, what is this 50? So does it have any meaning or significance? 50 man account, right? Does it have any significance? Are କିଛି meaning ଅଛି? No, sir. No, right? It's just a number, but it doesn't imply anything or it doesn't have any meaning. But if I just create a table like this, say name, marks, Aditya 75, Suchismita 72, Ishi 65, Sipo 53. So now you can understand, right? Now this is the table which is holding each student's marks. It has some meaning right now, correct? When the yes, data is kept in a tabular format, it signifies something. It has now a meaning. Now each student's individual marks has been stored over here. So this is nothing but you can call it as a information. Now the data is processed. Now it has become an information. Okay, this is called a raw form of data. Now this is an information. So each row is representing one record. Okay, each row is representing one record. So ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି row. Okay, ଯେମିତି Rishi's record. Okay, this is Suchismita's record. This is Aditya's record. This is Sipu's record. Okay, so each row is representing one record. So row ଅଲଗା ନା I mean row has a different name. Alternate ନା ହେଉଛି record or TUPLE tuple. Correct. So ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି column. ओके ये जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन टा होची रो ये जो वर्टिकल ओरिएंटेशन टा को कॉलम कहते नाउ दिस टेबल हैज टू कॉलम्स वन इज नेम कॉलम another one is marks column. Clear? yes, sir. Okay, so columns रो different ना होची columns fields or attributes. So column को you can call it as a columns को जगह field कह परिबो को जगह attribute कह परिबो. So don't be confused. Excel हो SQL हो Power BI हो जो भी टेक्नोलॉजी तुम सीखो column कहे और field कहे नहले attribute कहे.
Okay, so now you understood data is just a raw form of information. When the data is processed and kept it in a tabular form, now this converted into an information. Now, if you want to find insights out of it, let's say the data ru हमको knowledge extract करियर अछि. Got a simple example. Insight means suppose. So what are you understanding from this data? Okay, what are you understanding from this data? Any idea? What can you find from this data? Okay, correct. Clear. So this is what the knowledge. So highest, who has scored the highest mark, or what is the highest mark? What is the lowest mark? What is the average mark? A सब mark को add कला पर divided by 4 average mark. Number of students appeared for the exam 4. So this is called you are extracting knowledge from the data or insights from the data. Now, what insights will do? Insights will help you to take the decision. Correct? Yes or no? Yes. ଏଇଟା ଗୋଟେ student ଗୋଟେ college ର ଗୋଟେ school ର ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ insights ଟା ପାଇବ then you will take the decision whether ତମକୁ ସେ school ରେ କାହାକୁ ପଢେଇବାର ଅଛି କି college ରେ କାହାକୁ ପଢେଇବାର ଅଛି କି ନାହିଁ, right? This is what how the parents take the decision, right? କେତେ percent top score କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ highest score କେତେ ଅଛି, overall ଓଡ଼ିଶାର position କ'ଣ, right? School ର position କ'ଣ, what is the average like top 10 scores, top 10 जो performer ଅଛନ୍ତି school ରେ, so କେତେ percentage ରଖିଛନ୍ତି. These are the criteria. Yes or no? ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡେ କି, right? Whether the school's teaching and everything is good or not. Clear? Yes. Okay, so now we understood what is data, what is information, what is insight, basic insight. Okay, so while learning SQL or Excel, Power BI, you can understand how to draw insights. That we will learn. We will have to create charts, graphs, okay, all that. So now you understood the basics of data. Now, so I think pen ro visibility clear achi, ink visibility clear achi samastanku. Is there any problem? Yes, sir. It's visible. Okay. Okay, now the same thing is explained here. Data is raw and unorganized fact. Data is not organized. Information is organized and processed. Data is not meaningful. Information is meaningful. Data is not sufficient for decision making. Decision can be taken from information, usually unstructured and random, but information is presented in a structured manner. When I say structured format, that means when you store the data in a tabular format, that is called a structured format. Clear? Yesterday you were asking question, right? What is a structured format? Suppose you are trying to store the data in row and column in a tabular format, which is called a structured format. Okay. So let's say capturing individual scores, that is called data. But finding top score, average score, overall school and college's performance is called an information. Right? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now you understood. Okay. You understood. Okay. You understood data. You understood information. Let's understand how data gets generated. Data generally how data gets generated. See, there are multiple sources. Okay, I'll tell you how data gets generated. You're booking a ticket, right? You're booking a ticket in IRCTC. Or you're booking a bus ticket in OD bus.
maybe in some portal, okay, online bus ticket, okay. You are surfing on internet, you are searching something on YouTube, you are buying something from Flipkart, CCTV, okay, banking apps like internet banking, ATM. So every transaction you do, data gets generated. Yes or no? Ithre jaha bhi activity korche, data gets generated, right? You're Yes, you're sir. filling a survey. Okay. Okay, you're doing a survey. You're buying something from online store. Okay, you're buying something from the Reliance, or you're buying something from Max, you're buying something from Esplanade. Everywhere data gets generated, right? In the billing counter, they will place the order and they will, generate the receipt. That is also data. Okay, you're searching something on Google, that also generates. The search engine also generates data. Okay, so basic question is, there are many sources from where data gets generated. Okay. बैंक रे ट्रांजैक्शन करछे ओके तुम गोटे इंश्योरेंस पॉलिसी नेलो तुम आज गोटे ट्रेडिंग कलो तुम गोटे म्यूचुअल फंड किनिलो किछि स्टॉक किनलो डेटा बैकग्राउंड रे डेटा जनरेट हैला डेटा इंसर्ट हैला तुम किछि यू बिकम ए यूजर ऑफ फेसबुक तुम किछि पोस्ट कलो किछि अपलोड कलो फोटो वीडियोस डेटा सो क्लियर Yes, Yes, sir. sir. but data is getting generated but where to store the data where to store the data so data see data tame there are many different files okay data to ame store koruche I think you know when we write in suppose I'm writing w okay w is one character right everyone knows this one character okay 1024 character computer memory rate that is 1 kb right 1024 kilobyte 1 megabyte I think everyone knows this I don't need to tell this right clear samaste computer basics report theo right yes or no Yes, then sir. 102 for Yes, sir. MB, GB, then 102 for GB, okay, TB, that so on and so forth. Okay, now you can store the data in a file. Okay, I can store it in a Word file, I can store it in Notepad, I can store it in a PDF. Okay, so all that files I can use ASO file remove data store kori right? But problem is, see, problem aku konte file system. I mean, file system or data can obviously store, but the problem is, okay, the problem is file system re store kole, mu notepad re kiछि भी store karibi. या वर्ड रे किछि लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल ओपन कली किछि भी सेव कली मु सेतिर 10 जन गोटे गोटे रेकॉर्ड को 10 थर लिखि परिबि राइट विल इट रेस्ट्रिक्ट मी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेस्ट्रिक्ट करिवो कि ना लिखि परिबि डुप्लीकेट नेम्स or duplicate employee ID 102, 103, Excel Repi 103, 104. I can write, right? Yes or no? I can write it. Employee ID same time, same employee ID I can write repeat it 10 times. Yes, sir. Okay, good. Notepad file open karibi, notepad open karibi, or mu Microsoft Word open karibi. I can write n number of times. Duplicate record jete nahi sete restrict kari paribi. Okay. So first thing होची जदि normal हमें notepad की कौन सी गोटे normal file system रे data store करूचे the problem is first होची data duplicate तमे duplicate data entry करि परिबो duplicate data entry करि परिबो the second problem is see again I am telling you it's not nobody is going to ask this is all fundamentals you should be clear so duplicate data entry करि परिबो second problem होची lack of data security okay data security means anybody can access your file okay anybody can make changes to your file okay then there cannot be multiple users access one particular file multiple user गोटे जंती notepad रे तमे किछि बनेलो ना multiple user change करिया को चाहिले से माने change करि परिबेनी word रे तमे बनिया को चाहिले ना multiple user change करि परिबेनी okay so it becomes very difficult to find something तमे जंती suppose 104 account रो balance check करिया चाहछो तमे फटाफट बैंक को गलो तमे check कर दे परिबो now this becomes really difficult when you store your data in this flat files आपको कहते flat file रे data रखले
এই সব these are lot of problems ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଯଦି କିଛି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ ରିକଭର କରିହେବନି ହେଲା ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ ରହିଲା ଫାଇଲରେ ଡେଟା ରଖିବା ଯେମିତି ଫାଇଲ ଲାଇକ୍ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାଇଲ ଫର୍ମାଟ୍ସ ଓକେ ସେଇଠି ଡେଟା ରଖିଲା ମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ କି ଆରାଉଣ୍ଡ 1970sରେ ଡେଟାବେସ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଲା ଡେଟାବେସ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଲା ଓକେ ଡେଟାବେସ୍ ଇଜ introduced. So, database data can be stored in proper tabular format or tabular structure. Okay, so no need to see, no need to go through. किसी दरकार ही नहीं फाइल सिस्टम रो कौन ड्रॉबैक थिला फाइल रे डेटा स्टोर करथिला प्रॉब्लम किछु थिला केही पचारिबेनी इट्स ऑल थियोरेटिकल थिंग ओके जदि हमें पढिया इट्स वेस्टेज ऑफ वन डे विल बी सिंपली वेस्टिंग वन डे जदि हमें पढिया विल बी सिंपली वेस्टिंग अ डे खाली फाइल सिस्टम देयर वर हम कि सिक्योरिटी इश्यू थिला डुप्लिकेट डेटा एंट्री होतिला मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करि पर नतले से फाइल ताको यूज करिया पई लेट्स से गोटे फाइल ओके मोर बैलेंस थी 40,000 ओके आउ जन आसला सेठी चेंज कर देला 10 कर देला 70 कर देला तार किसी कंट्रोल ही नथला केही भी आसी गोटे फाइल जदी कॉमन लोकेशन रे थिबो चेंज कर देला कनकरेंट माने साइमल्टेनियसली 10 जन काम करि परबेनी कनकरेंट यूजर माने मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करि परबेनी डेटाबेस रे कोन तुम अकाउंट अपडेट हैला अकाउंट रो बैलेंस अपडेट हैला माने तुम जो भी ब्रांच रे देखो अकाउंट बैलेंस सेटिंग ही थिबो लेट्स से तुमरे 10,000 थिला 5,000 तुम विथड्रॉ कलो नाउ यू हैव 5,000 बैलेंस सो ऑल ओवर वर्ल्ड रे जो जगह रे रही कि अकाउंट बैलेंस चेक करबे इट विल बी द सेम दैट वाज नॉट हैपनिंग इन द केस ऑफ व्हेन यू स्टोर डेटा इन फ्लैट फाइल्स जेमति नोटपैड रे स्टोर कला माने सेही प्रॉब्लम थिला तो सेति पे कि ताको ओवरकम करिया पे कि डेटाबेस इंट्रोड्यूस हला सो डेटाबेस रो सी द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस इज इट इज अ स्टोरेज प्लेस database is a storage place where data is stored in tabular format. Database is a storage place means database, of course, it's a software. Okay, what is storage place where data is stored in tabular? So suppose this is a storage place. It what is storage place? Okay, it's a storage place. So data is stored in tabular structure. Multiple tables re data store hotila. Okay, you can store the data in multiple tables. Now, what do you mean by storage place or a repository? Think of your library. Think of your refrigerator. I don't remember the spelling of refrigerator. Okay. So think of almirah, think of library, think of refrigerator. So tell me one thing, तुम almirah रे जाके directly कपड़ा dump करूचो ना specific shelves रे रखुचो almirah रे जाके directly जहाँ आणुचो शॉपिंग करके डायरेक्टली डंप करूचो ना तमर गोटे स्पेसिफिक रैक अछि तमर पेरेंट्स को गोटे स्पेसिफिक रैक अछि गोटे जगह लॉकर अछि गोटे जगह ज्वेलरी अछि ओके से सब मिक्स कर रखुचो ना सेपरेट सेपरेट शेल्फ्स रे रैक्स रे मेंटेन करूचो Separate. लाइब्रेरी रे जाके हमें सपोज मु गोटे स्टॉकिस्ट पाखरु बुक आनली मु लाइब्रेरी जाके डंप करबिनी राइट डिफरेंट डिफरेंट रैक्स अछि कोठी साइंस अछि कोठी फिक्शन अछि कोठी एकेडमिक बुक्स अछि सब जगह रे मु मेंटेन करू रखबी डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स रे राइट यस और नो Yes, sir. Yes, sir. रेफ्रिजरेटर रे नॉन वेज वेजिटेबल्स ओके जहां भी रहला तुम गोटे जगह रे मिक्स कर दो ना सब ताकू सेपरेट सेपरेट तार डिफरेंट डिफरेंट डेडिकेटेड प्लेस रे रखुछो करेक्ट Yes, sir. Okay, that is what database is. Database is a storage place where you don't dump data. Data आणके मैं dump करने. We are just creating tables to store data. एटी मु suppose more database is about a school रो database मु maintain करछि. Here I'll have teachers information table रे. एटी students information रहबो. एटी library books information रहबो. एटी staff salary information रहबो. एटी आ गुड जगह fees रो information रहबो. आ गुड जगह exam रो information रहबो. So clear? Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Database is a storage place where data is stored in tabular format. Okay. Databases are used for storing, maintaining, accessing any sort of data. So when I say storing, maintaining, and accessing any sort of data, that means in database you can store the data. Okay. You can store the data means you can
directly you cannot store it. You can store it in a, you can keep it in a table. Okay, table database re direct data rakhani. We have to create tables, then within in the table we will insert the data. So first hochi, let's say, so तमे गोटे कस्टमर हेले एसबीआई रो तम डेटा कस्टमर टेबल रे एंट्री हो, यस और नो, तम मतलब फॉर्म फिल करबो, योर डेटा विल बी क्रिएटेड, तमर डिटेल्स क्रिएट हो कस्टमर टेबल रे, करेक्ट? Yes. ओके, सो डेटाबेस रे हम डेटा इंसर्ट करछे, स्टोर करछे, डेटा को मेंटेन करिया. सो मेंटेन करिया मींस व्हाट? मेंटेन मींस डेटा को अपडेट करि परिबो, डेटा को डिलीट करि परिबो. तमर बैलेंस अबिट 1000 account खोलिछ, right? So when you deposit again 10,000, so your account balance will be 11,000. So that means this balance has to be updated, correct? Yes, Yes or sir. no? Database रे entry को update करा जिबा दरकार. तमे आज भुवनेश्वर रे रहउछ, काली तुमरो चेंज होला, लेट्स से एचडीएफसी बैंक भुवनेश्वर रे तुम account open करछ. Now you move to a different location or you relocated to a different location, then that address has to be changed. तुम बैंक रे जाके रेंट एग्रीमेंट शेयर करबो, तापर it will be updated, right? Yes, sir. Okay, now maintaining means whenever required you have to update the data, you have to delete the data. Okay, so that means suppose somebody is working as a software engineer and getting 25,000 salary. If he'll be promoted as a senior software engineer, his salary will be changed to 40,000. This information has to be updated in the table also, correct? So so databases, in the database or in the table, we can insert the data, we can update the data. If required, we can delete the data. ଯଦି हमको दरकार पड़ला, suppose this person is leaving the organization, we may have to delete the information. We may have to delete his details from a particular table. Clear? Yes, sir. So accessing, so everybody is understanding, yes or no? Everybody is following. Only I'm Yes, listening sir. few. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. I'm listening very few responses, so I'm worried whether you are understanding or not. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Understand, sir. Okay, perfect. Kahar kichi bhi doubt hochi, you can pause me at any point of time. Kichi bhi doubt hochi, you can ask me. Sir, actually, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କଲେ ଗୋଟେ disturbance ହବ ସେଥିପାଇଁ. Okay, understood. Yes. କାରଣ ତମେ ତଳେ actually କଣ ହୁଏ, ତମେ ତଳେ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ କୁ ଫଲୋ କରିବ ନା, ଯଦି ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ହେଲା କି? ଠିକ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଇ ନିଡ୍ ଅ କନଫର୍ମେସନ. ମେ ବି ତମେ ଚାର୍ଟ ରେ ପିଂ କରିଦେଇ ପାରିବ, yes, ତ ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ get an acknowledgement. Okay, ठीक ଅଛି, fine, good to go then. Okay, so କାହାର ବି କିଛି ବି doubt ରହିଲା, any point of time you can stop me and ask me questions. I feel that we are at a very initial stage, basic concept. So I'm damn confident that you guys are, your concepts will be clear. So ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ବେଶୀ ପଚାରୁନି, but କିଛି ବି କାହାର doubt ଥିଲେ you can stop me, right? କେହି ବି stop କରିକି question ପଚାରି ପାରିବେ. ଏଟା ବହୁତ basic concept ତ, ସେଥିପାଇଁ କି ମତେ ଲାଗୁନି କିଛି doubt ଥିଲା ଭଳିଆ. Okay, so database we can store the data, we can maintain the data, we can access the data. When I say access means what? Access means read. Access means display. Access means fetch. Access means retrieve. Are same meaning. माने तुम जेतेबेले किछि भी सर्च करूछ गूगल रे, सर्च कला पर तुम रिजल्ट देखुछ. ओके, सर्च कला पर तुम आउटपुट देखुछ. ओके, तुम पर्टिकुलर लोकेशन रे खोजुछ कि पर्टिकुलर ब्रांच अछि कि नहीं. ओके, तुम बैंक रे जे अकाउंट बैलेंस चेक करूछ. ओके, सो बेसिकली तुम मतलब अकाउंट बैलेंस चेक करूछ, सी डिटेल्स फेच करके डेटाबेस रो आनकी तुमको डिस्प्ले करूछ. दैट इज कॉल्ड एक्सेसिंग द डेटा. आई एम ट्राइंग टू एक्सेस माय अकाउंट बैलेंस. माने मु चेक करे चाहूँ अकाउंट बैलेंस, राइट? So कई कोनते रीड, कई कोनते डिस्प्ले द डेटा, कई कोनते फेच द डेटा. टेबल रो रिकॉर्ड फेच करे देखा, टेबल रो डेटा रिट्राइव करे देखा. रिट्राइव, फेच, डिस्प्ले, रीड, एक्सेस हैज सेम मीनिंग. यार समस्तकर मीनिंग होचे सेम. ओके, टेबल रो डेटा अछि, तुम तो डिस्प्ले करया चाहबो, दैट इज यू आर ट्राइंग टू फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल.
Can you show me, somebody, your manager will come to you, can you show me what is the total revenue generated in, let's say, sales department? So ତମେ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ଲେଖିଲ ତ ସେଲ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଡିସପ୍ଲେ କରିବ। ତାମାନେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫେଚ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କହିପାରିବ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରିଟ୍ରିଭ୍ ଦ ଡେଟା ଅର୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଶୋ ମି ଦ ଡେଟା, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫେଚ୍ ଦ ଡେଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେବଲ୍? Okay, it all has same meaning. Okay, so obviously data ଯେମିତି store କରୁଛେ maintain କରୁଛେ, we can also read the data को read କରିକି fetch କରିକି ଦେଖିପାରିବା। Okay, in database, data is stored in rows and columns in a series of tables so that the data querying and processing will be much faster. Okay, जदि data टा tabular structure रहिला तो data query करिया retrieve करिया will be much faster. So that means what? A simple example, तमे जदि गोटे जगह dump करिके रखुछ, obviously you will find it really difficult to, okay, fetch things. तो जब कहले कि सिंपल तमे, लेट्स से यू हैव वन अलमीरा, तमे जब गोटे जगह डंप करछो, सो फाइंडिंग समवन स्टफ इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट तमे जब प्रॉपर सब जगह डिफरेंट रैक रे मेंटेन कर रखिछो, कार लेट्स से कहार किछि दरकार हला, लेट्स क्लोथ्स या किछि भी दरकार हला, ज्वेलरी, तो यू कैन गो डायरेक्टली गो टू दैट लॉकर और सेही पर्टिकुलर रैक को जाकी यू कैन फाइंड द ज्वेलरी, राइट? जब तमे गोटे जगह मिक्स खिचड़ी कर रखिछो, फॉर यू इट विल बी डिफिकल्ट। सेम similarly, in the database also, tabular data information store hochi, so retrieval will be much faster because we are maintaining a structured format. Okay. Data can be easily accessed, managed, modified, updated, controlled, and organized in a database. Okay, that's okay. Now, the next thing is we understood data. We understood database. Okay. We understood data, we understood database. Then what is DBMS? What is DBMS? So DBMS stands for DBMS. Database management system. Correct. Database management system. Okay. DBMS stands for database management system. That's very simple. Database को जे manage करछि सरला. Okay. Database को जे manage करछि, that is called database management system. So database रे data store होला. Database हमें visually सब बेले एमती ही present करिया. Okay, cylindrical box वाले. फिर database रे data store होला. Okay. जो हमें कहले database रे we can store the data, we can maintain the data, we can access the data stored in rows and columns. But who will do that? There is a software which will be doing all these activities. There is a software which will be doing all this activity. That software is called DBMS, Database Management System. Okay, Database Management System was good a software which will carry out all these activities. Okay, so what are those softwares? So software, if you see, तमे सुनिथिबो आगरो सुनिथिबो Oracle सुनिचो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. SQL Server सुनिथिबो? Yes, sir. Yes, sir. MySQL सुनिथिबो? Yes, Yes. sir. आ गुटे अछि Sybase. Okay, आ गुटे अछि MariaDB. गुटे अछि IBM DB2. Azure SQL, एमती देखिया गले we have 20 or 30 plus एमती DBMS softwares अछंती. Okay, 20 to 30 plus, okay, DBMS database management system software अछंती. Now, these are called database management system software. These are different vendors market रे अछंती. Okay, so Oracle अच्छी, SQL Server टा Microsoft रो, MySQL टा भी Oracle नहीं जाइछि, IBM रो अच्छी, MariaDB गोटे MariaDB कंपनी रो अच्छी, एमती बहुत सारा Sybase कर गोटे कंपनी रो अच्छी, मार्केट रे बहुत सारा database management system अच्छी. Okay, so now database management system सब ए एक्टिविटी गुडा करिवे. ए जो हमें कहले database रे में we can store the data, we can maintain the data, we can access the data, whatever task. Okay, so ए माने ही करिवे. But केमती करिवे? इथिरे हमको कमांड लिखियो पड़िबो. We have to give instructions or we have to write command or query को आंदी. Query लिखियो पड़िबो, command लिखियो पड़िबो. Okay, से जो command टा लिखा हुए, जो command टा में लिखिबा, से command टा language होची SQL. Okay, SQL होची गोटे language which is called structured Query language. query language. SQL होची गोटे language
which will be used by these softwares to interact with the database. Database को केवल SQL language ही जाना. Database can understand SQL language. As you guys know, Odia, Hindi, English. If I speak in Tamil, you will not be able to understand. Or if I speak in Kannada, you will not be able to understand. Same thing, database can understand only one language. Database रा universal language होची SQL. Okay, database रा universal language होची SQL. मार्केट रे जितने भी सारा DBMS सॉफ्टवेयर अछंती, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अछंती, नाउ ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स यूज ओनली वन लैंग्वेज. ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, बट आमे पढ़िया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर. ओके, आमे पढ़िया हमको एनी वन DBMS सॉफ्टवेयर को पढ़िया पड़ियो. आमे वी कैन नॉट लर्न ऑल दिस. Okay, we will be learning only one database management software, that is Microsoft's product MS SQL, Microsoft SQL Server. Eta mein padhiya. So the best part is if you learn one of the database management system, jehetu jette market re database management system available achonde, they understand, they use only SQL language to talk to database. Now once you understand or once you master this one software, you can work with the remaining software that is available in the market. Clear? I will give you a very simple example. Okay, I don't know whether I have given you yesterday or not. See, SQL होची गोटे language जोटा जेते सारा market रे, these are like competitors. Okay, market रे बहुत सारा जेमती what, see, mineral water company समस्ते mineral water sell करछन, but we have brands Bisleri, Bubbles, Aquafina, Kinley, Railneer. Okay, yes or no? These are the competitors, but they all are selling mineral water, right? Taste रे भी hardly difference तमे find out करि परिबो. Yes or no? Yes, Yes, sir. So सेमती market रे ये जेते सारा DBMS मु mention कली, मु 5-6 mention कली, there are more than 30 plus database management system softwares are available in the market. All the softwares use, all the database management software use only one language. They understand only, they use only one language to talk to the database, to interact with the database, that is SQL. So the best part is, if you learn one tool, you can easily work with other tools that are available in the market. तमे SQL server पढ़ी गलो, organization join कला पर से कहबे हमरो आमे पाखरे अछि MySQL, तुमको हार्डली 2 days लागियो सेतरे काम करिया पे. हम पाखरे अछि Oracle, तुमको 2 days लागियो ओटा काम करिया पे. Okay, for example, तमे let's say तमे स्विफ्ट रे गाड़ी चले सिखुछ ड्राइविंग स्कूल रे, राइट? तमे जदि काली तुमको गोटे डिफरेंट मु व्हीकल देबी, डेफिनेटली सी तमे 15 days गाड़ी चले सिखलो. ओके, तमे जो घरे होंडा सिटी नहीं के आसलो, यू डोंट हैव टू गो टू दैट ड्राइविंग स्कूल वंस अगेन, राइट? यस और नो? मु स्विफ्ट रे गाड़ी चले सिखली 15 days टाइम नहीं की. Yeah. Okay, 15 days पर I plan to buy a new vehicle, that is Honda City. Will I go to that school once again to learn Honda City? No, sir. No, right? So SQL holds got a standard universal language for databases. Jette market रे database management system software अछन्ते और structured data रे काम करूछन्ते, से माने यूज करन्ते SQL. तमरो टारगेट होछि to master SQL. That's it. Software किछि भी हो, okay? Software किछि भी हो, you have to master SQL. Guys, I'm getting a call. Just give me a moment. Sure, no problem. So all clear? Any questions? कार किसी भी question अच्छी? Let's discuss. No, sir. No, sir. Yes. Sir, sir, good question. Yes, go on. Sir, actually जो MS Excel अच्छी से CBA DBMS अंडर आछी ना?
ওটা গেল এমএস এমএস Excel. না না এক্সেল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এক্সেল এমএস অফিস আন্ডার আসবে দ্যাট ইজ নট এ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সো Okay, sir. डेटा स्टोर हुए बट दैट इज नॉट अ डेटाबेस इट्स अ स्प्रेडशीट तार लिमिटेशन बहुत अछि डेटाबेस रे जेमते हम माने मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड रखि परिया एक्सेल रो प्रॉब्लम होछि 10 लाख रिकॉर्ड रखि हबो मैक्सिमम दैट टू लक्ष रिकॉर्ड जदी रखिबो भी एक्सेल 10 थर क्रैश हबो मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करूचंती किंतु बहुत सारा सिक्योरिटी इशू माने सेटा तार पर्पस पूरा कंप्लीटली अलगा ओके डेटाबेस रे जेमते हम लेट्स से गोटे बैंक डेटाबेस मेंटेन करछि टू स्टोर कस्टमर डेटा ओके सेमती एक्सेल रे तमे बहुत लिमिटेड डेटा रखि परबे एक्सेल रे बहुत सारा लिमिटेशन अछि एक्सेल स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन ପାଇଁ କି not for largest ଯେମିତି MNCs ମାନେ ସେମାନେ डेटा ମାନେ ଯୋଉଠି like when you have transactional data customer data ଯୋଉଠି millions ରେ billions ରେ customers ଆସୁଛନ୍ତି okay they cannot store their data in Excel. There are a lot of I'll explain you I'll later when we learn Excel I'll explain you the difference between Excel and SQL. Okay. Okay, let's jump to the next slide. I'll show you this. जहाँ हमें discuss करें same thing I think is written here. A database DBMS is a software designed to store and manage data in a database. DBMS helps in efficient retrieval, insertion of and deletion of data in database. DBMS provides an interface to perform various operations mentioned below. Okay, DBMS रो interface माने कौन? DBMS कोटे screen type रो provide करे. Okay, कोटे front end type रो provide करे. जोठी हमें कमांड लिखि परिया एठी हमें कमांड लिखि कि गोटे बटन रन बटन थिबो हमें रन करि परिया हमें किछि भी लिखले गोटे टेबल क्रिएट में लिखि परिया टेबल रे डेटा स्टोर करे पे हमें मेंटेन लिखि परिया टेबल रो डेटा डिलीट करे पे लिखि परिया टेबल रो डेटा अपडेट करे पे लिखि परिया आ एसक्यूएल ए जो गुडा सब लिखा बा एसक्यूएल लैंग्वेज रे लिखा एसक्यूएल इज वेरी सिंपल लैंग्वेज इट इज नॉट लाइक सी जावा पीएचपी वाला कॉम्प्लिकेटेड नो है बिल्कुल नहीं ओके इट्स वेरी सिंपल दिस लैंग्वेज इज सेम इट्स okay this language is very simple like english language simple तो नो एसक्यूएल रो काम होचे गोटे क्वेश्चन प्रियदर्शन रो व्हाट अबाउट नो एसक्यूएल रो काम होचे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा संगे काम करिया दैट इज अ बिग डेटा थिंग दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट करियर पाथ तार जो माने डेटा इंजीनियरिंग रे जिबाकू चाहिबे ओके से माने बिग डेटा रे काम करे जोटी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा संगे तम काम करे पड़े जेंति ऑडियो फाइल वीडियो फाइल ओके तापरे तमरो जेंति फेसबुक रे गोटे पोस्ट रे हम कमेंट लिखुचे तार किछि स्ट्रक्चर ही नहीं टेबल रे डेटा रखे इट्स स्ट्रक्चर फेसबुक रे लिखुचे व्हाट्सएप रे चैट करूचे ओके गोटे फ्लाइट जाउची तार जो हमर ब्लैक बॉक्स रे जो बहुत सारा लॉग जनरेट होची ओके एटीएम रे बहुत सारा लॉग जनरेट हुए किए को टाइम रे एंट्री कला केते पैसा विड्रॉ कला डिपॉजिट कला कैमरा रे भी कैप्चर करिया एवरीथिंग गेट्स जनरेटेड यदि से डेटा को एनालाइज करिया पड़े से बहुत अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रे थाए ओके बहुत माने सेतरे किछि एमति टेबुलर स्ट्रक्चर से डेटा को आनी कि नो एसक्यूएल थ्रू रे सेगुडा सब प्रोसेस करा जाय डॉक्यूमेंट गुडा को तापर तक करा जाय दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स दैट्स पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट करियर पाथ सेटा अलगा पार्ट ओके तुमको जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऊपर काम करिया पड़े बट इन डेटा एनालिटिक्स 99% will be working with structured data tabular data सब tabular format रे थिबो now it will be maintaining some sort of structure okay सेटा बिग डेटा रे जीवो बिग डेटा इंजीनियरिंग ओके सो डेटाबेस रो गोटे तुमको गोटे इंटरफेस मिलियो जोठी हमें कमांड लिखि कि क्रिएट करि परिया ओके डेटाबेस रो गोटे इंटरफेस मिलियो ओके हमें तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिया सेठी में कमांड लिखले माने टेबल क्रिएट होबो डेटाबेस क्रिएट होबो ओके फर्स्ट तुमको गोटे स्ट्रक्चर क्रिएट करिया पड़ियो डेटाबेस क्रिएट करिया पड़ियो ता भीतर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करिया पड़ियो ता भीतर तुम डेटा स्टोर कर परियो ओके नाउ DBMS यूज करी हमें ये सब एक्टिविटी कर परिया क्रिएट डेटाबेस क्रिएट टेबल्स क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स ओके डेटा को इंसर्ट कर परिया डिलीट कर परिया डिलीटिंग डेटाबेस टेबल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी हमें डेटाबेस रे डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर परिया डेटा सिक्योरिटी माने कोन सिंपल मु चाहूची ए डेटा ए लोक सपोज तमे काम करछो भुवनेश्वर ପାଇଁ कि यू आर अ सेल्स मैनेजर भुवनेश्वर तुमको कहना भुवनेश्वर रो डेटा ही डिस्प्ले होबा दरकार तमे जदी ट्राई करबे एक्सेस करबे लखनऊ रो डेटा देखिया ପାଇଁ कि पुणे रो डेटा देखिया ପାଇଁ कि यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट
ओके तुम जब देखो बैंक रे तुम आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बैंक ओके बैंक रे बैंक मैनेजर टेल मी वन थिंग बैंक मैनेजर जहाँ करि परिबो बैंक रो पियोन और मैसेंजर से काम करि परिबो कि बैंक मैनेजर जहाँ करि परिबो पियोन और मैसेंजर बैंक रे No, सेम sir. काम No, करि sir. परिबो No, इवन sir. ताकू भी गोटे यूजर आईडी मिलथिबो ताकू यूजर आईडी पासवर्ड मिलथिबो से खाली कोन करि परिबो पासबुक प्रिंटिंग करि परिबो करेक्ट Correct. but he cannot deposit money or withdraw help customer to withdraw money or bank କିଛି signature approval କିଛି ରହିବନି କିନ୍ତୁ bank manager starting from loan approval withdrawal approval ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ even there is a difference between clerk and manager right Yep. ओके सो डिफरेंट जहाँ जहाँ प्रिविलेज अच्छी जहाँ जहाँ ऑथराइजेशन अच्छी से हिसाब से डेटाबेस रे भी से रोल डिफाइन कराई परियो तमे ए डेटा को ए स्पेसिफिक रीजन रे डेटा को एक्सेस कर परियो से डेटा को एक्सेस कर परियो एटा को तुम कर परियो एटा को डिलीट कर परियो एटा को डिलीट तमे डेटा एक्सेस कर परियो तमे डेटा डिलीट कर परियो एवरीथिंग इज गिवन ओके दैट कैन बी आल्सो प्रोवाइडेड इन एसक्यूएल जेमति नॉर्मली सी सपोज सो आई एम ए टीम मेंबर suppose we are 5 members working in a team I cannot see these people's salary ମୁଁ ଆଙ୍କର details ଦେଖିପାରିବି କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବି because salary is a confidential thing right so as a colleague or as an employee I am not supposed to see their salary but my manager can see all of our salary କାରଣ ତାକୁ ସେ access ଅଛି understood ସେଟା କୁହନ୍ତି data security data କାହାକୁ କୋଉ data କେତିକି visible ହେଇପାରିବ so that is part of data security and that is not part of I mean definitely as a data analyst हमको एटा दरकार नै एटा गोटे अलगा रोल अछि that is called database administrator DBA के सुनिछ DBA database administrator Yep. database हाँ database administrator रो रोल होचे एई सब काम करिया यूजर क्रिएट करिया ओके काहाकू कोन एक्सेस दरकार ताकू एक्सेस माने ग्रांट करिया ओके काहर कोन प्रॉब्लम है डेटाबेस रे किछि प्रॉब्लम होला डेटाबेस क्रैश हे गला सर्वर डाउन हे गला ताकू केमति रिस्टार्ट करिया डेली बेसिस रे जहाँ ट्रांजैक्शन होता है बैकअप भी नबाक पड़ियो राइट बैंक ट्रांजैक्शन गुडा डेली एंड ऑफ द डे एवरी 1 आवर बैकअप एंड ऑफ द डे बैकअप कहना किछि गोटे क्रैश हे गला लेट्स से किछि भी डिजास्टर हे गला ताकू रिकवर केमती करा हबो तांको काम होछि से आरली बैकअप एंड ऑफ द डे बैकअप डेटाबेस रो परफॉर्मेंस स्लो होछि तमे बेले बेले तमे जाइतो बैंक को नहीं सर सर्वर बहुत स्लो किछि हम कर परनो एबे डाउन होछि तमाने कोन डेटाबेस रो से माने डेटा रीड करि परनांती से माने किछि डेटा लेट्स से फॉर्म भर के सबमिट कला को से प्रोसेसिंग बटन बोलुथियो माउस रो जो प्रोसेस बटन गोला बोलुथिबो तो ऑब्वियसली सेठी काम होई परने सो तमाने डेटाबेस सर्वर डाउन होछि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द डेटाबेस सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर गोटे डिफरेंट कोर माने रोल या पे भी अलगा कोर्स गोटे 2 मास रो अलगा कोर्स हुए सो से माने कोन करंती जाइके डेटाबेस रो से सब स्टडीज गुडा कला पर से माने डेटाबेस को डाउन थिल अप करि परिबे रीस्टार्ट करि परिबे डेटा बैकअप नेबे को नुवा यूजर आसला प्रोजेक्ट रे जॉइन करा ताको पे गोटे अकाउंट क्रिएट करिया तांकर पासवर्ड सेट करिया डेटा सिक्योरिटी दबा देयर आर लॉट ऑफ रोल्स मु बहुत जेनरिक कहूची माने लिटरली 3-4 मास को पढ़ंती एटा गोटे अलगा कोर्स एटा बहुत जनती हैदराबाद जानती पढ़िया पे कि बैंगलोर जानती पढ़िया पे किंतु एतिर अपॉर्चुनिटी कम थाए कारण गोटे प्रोजेक्ट रे 100 जन जदी माने लेट्स से 100 जन कि 100 भी नुहे गोटे प्रोजेक्ट रे 200 ରୁ 300 जन एम्प्लॉय थिले मात्र हार्डली 2 जन डीबीए थांती कारण डेटाबेस जो डीबीए माने ए प्रॉब्लम गुडा बहुत रेयर हुए आ जेबे हुए माने काम करंती आंको बहुत रिस्क वाला जॉब है राती 12 प्रॉब्लम हेले राती 12 उठ के जीवा पड़े ऑफिस ऑल ऑफ सडन किसी डेटाबेस स्लो हो गला प्रोडक्शन रे काम प्रोडक्शन माने लाइव एनवायरनमेंट रे तुम जाइछो एटीएम को एटीएम रो कैश विथड्रॉ होनी किछि प्रॉब्लम हेछि ऑब्वियसली दैट इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द बैंक सो कौन प्रॉब्लम हेछि बोले इमीडिएटली राती अधरे सोइथिबो तुमको कॉल आसीबो कि प्रॉब्लम हेछि डेटाबेस रे आसो इमीडिएटली दरकार पड़े कंपनी तुमको घर को कैब पठेबो कैब पठेकी तुमको डकेबो इमीडिएटली आसीबो तुमको इंसेंटिव सब मिलिबो किंतु टेंशन टिके हो इमीडिएटली जाइए से प्रॉब्लम को जो इश्यूज थी ताको सॉर्ट आउट करके फिक्स करके आसिया पड़ो जो तुम न कर पारछ तुम सीनियर को रिपोर्ट कर सीनियर भी सेटा कर लेट्स से तुम इंडिया रे बसो कि यूएस प्रोजेक्ट में काम करछ तो तांको भी कहबो 2-3 जन इन्वॉल्व कारण सेटा बैंक बैंक की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ओके ट्रांजैक्शन टा हेई पौनी इंटरनेट बैंकिंग सर्वर डाउन हो जाई सो सेति बैंक डेटाबेस वाला को इमीडिएट ओके सो नाउ दैट्स अबाउट डीबीएमएस रे हम कौन कौन कर करेंगे ओके ओके এটা ଗୋଟେ सिंपल एग्जांपल आई होप यू गाइस कैन नाउ रिलेट कि एठी यूजर एठी बसला ओके जहां भी काम कला ओके डेटाबेस रे स्टोर होला थ्रू डेटाबेस मैनेज डीबीएमएस राइट इट कैन बी एसक्यूएल सर्वर इट कैन बी ओरेकल
It can be MySQL, it can be MariaDB, depend करे कंपनी क्लाइंट काहा को प्रिफर करूछ ओके तमे मु कहि परिबिनी राइट तमे को मिनरल वाटर प्रिफर करूछ राइट कोन तमर इच्छा कहि परिबिनी कॉल सो कंप्लीटली तमर ही विश कि तमे काहर मिनरल वाटर यूज करिया चाहूछ ओके तुमको की भलो प्राइस रे दोछ तुमको के लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तमे डिपेंड करछि लेट्स तमे तमर सर्विस केमति रहछ आफ्टर सेल सर्विस कोन होछि पानी तो ठीक अछि वन टाइम तो ड्रिंक कलो ठीक अछि बट तमे किछि भी प्रोडक्ट किनछो सेल्स आफ्टर सर्विस कोन रहछ सब डेटाबेस मो नै गली डेटाबेस डीबीएमएस नै गली एसक्यूएल सर्वर रो जदि मोर प्रॉब्लम हला से माने टाइमली सपोर्ट न करिवे ओके तांकोट भी सब आई कैन नॉट सॉल्व 100% राइट किसी ना किसी इश्यू थाए मु तांको ऊपर भी डिपेंड होगा पड़े सपोज किसी गोटे टेक्निकल इश्यू आसला मो इंटरनल टीम सॉल्व करि परनाती आई विल हैव टू रीच आउट टू माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली कि प्रॉब्लम टा होची ओके सो तुमको फिक्स करिया पड़े से माने पर टिकट चार्ज करंती तुम जो टिकट रेज करथियो से माने एमथि बतो एतिकटा गोटे वर्ष रे लेट्स से 100 टिकट्स तमे से माने सॉल्व करियो तमरो जेहेतु तमे लक्ष लक्ष टका पे करके लाइसेंस आनछो 100 टिकट्स रे गोटे टिकट जदि अधिक हला पर टिकट से माने मे भी $5 चार्ज करिवे कि $10 चार्ज करिवे तमे से माने टिकट रेज करिवे देखो ऑब्वियसली तो लेट दी प्रकार प्रॉब्लम होती रियली टेक्निकल प्रॉब्लम से माने सॉल्व करिवे तमे तमे कमांड ठीक रे लिखि परनो से माने कोन कहबे तमे कैपेबल नय आ से माने सेटा को सॉल्व करले तुमको चार्ज करिवे तांकर प्रोडक्ट तमे शिखिनो तमे लिखि परनो बट जदि रियली टेक्निकल प्रॉब्लम होला डेटाबेस डाउन होला जदि तमे ही सेटा पारुनो सेटा जेन्युइन जिंस दे विल हेल्प ते माने सपोर्ट करिवे आ तुम बेसिक जिंस ପାଇଁ कि तमे यू कैन नॉट अप्रोच टू माइक्रोसॉफ्ट तमे इंटरनली सेटा को सॉल्व करिवो फास्ट इंटरनली तुमरो इंटरनली ट्राई टू सॉल्व इट जदि काम कोनी ता परे जाके माइक्रोसॉफ्ट जहार प्रोडक्ट ताको अप्रोच करिवे कि भाई एटा हेई पाउनी ना लेट्स आ ता ପାଇଁ भी ସେମାନେ बहुत चार्ज करबे ମୁଁ ଗୋଟେ एग्जांपल देली $5 $10 एते सस्ता रे भी नथिबो आउरी अधिक बहुत चार्ज हेतिबो मे बी $100 हेतिबो कारण माइक्रोसॉफ्ट टीम संगे तुम कॉल रे जाउछ माने कम से कम $100 200 कोटे टिकट रो कॉस्ट ओके क्लियर सो एटा हला डेटाबेस जोठी हमर डेटा रहला टेबुलर फॉर्मेट टेबुलर स्ट्रक्चर रे स्टोर हे कि ଆଉ ସବୁ ଜାଗା କାମ DBMS ରେ ହିଁ ହେଲା DBMS ଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି फ्रंट एंड को सरला एटी ये जहां एंट्री करूची दरकार पड़े एटी स्टोर होची एटी जदी काहर रेकॉर्ड अकाउंट बैलेंस चेक करे अछि दरकार पड़े एठू आसी डेटा एको डिस्प्ले होची क्लियर ए सब जिंस गुडा हे करूची डेटाबेस रे डेटा स्टोरेज डेटा रिट्रीवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स क्वेरीज डेटा सिक्योरिटी क्लियर Yes, sir. Yes, sir. सो कार किछ क्वेश्चन अछि सो फार कार किछ क्वेश्चन अछि एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन No, sir. ऑल क्लियर राइट Yes, sir. ओके ग्रेट okay now uh, so SQL is structure query language SQL has some sub languages SQL again categorized it has 5 sub languages one is called DDL okay one is called DML one is called TQL DCL TCL so it hala data definition language it hala data manipulation language এটা data query language
data control language, transaction control language. Okay. So DDL, DML, DQL, DCL, TCL. Okay, this I'll explain it in the next class. Okay. But before that, I'll tell you one thing. So आम तो डेटा रे काम करछे हमको बेसिकली को डेटा रे डील करिया पड़े हमको गोटे डेटा डील करिया पड़े वन इज कॉल्ड टेक्स्ट डेटा कैटेगरिकल डेटा और स्ट्रिंग डेटा इट्स ऑल सेम थिंग ओके टेक्स्ट डेटा कैटेगरिकल डेटा स्ट्रिंग डेटा टेक्स्ट डेटा माने लेट्स से मोलेक्युलर लेट्स से सूर्य so this is the text data okay so then we have numeric data again so numeric data रे कोन हला गोटे असला होल नंबर गोटे असला डेसिमल नंबर राइट ओके सो सूर्य लेट्स से आई राइट संतोष एको हमें गोटे स्ट्रिंग कहि परिया और आकु टेक्स्ट डेटा को टेक्स्ट कहि परिया ओके स्ट्रिंग कहि परिया टेक्स्ट कहि परिया ओके नाउ दिस इज कॉल्ड अगेन जेमती टेक्स्ट डाटा सेमती न्यूमेरिक डाटा कोन हला होल नंबर माने जेमती नंबर ऑफ चेयर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड आमे केमती सेटी राउंड नंबर আছে राइट 13 स्टूडेंट्स अटेंडेड 20 orders placed 25 seats booked right I cannot say 13.2 students attended 25.2 tickets booked right so decimal number कोन आसला let's say जेमती इंसेंटिव मते 2.5% बोनस मिलछि 3.5% इंक्रीमेंट मिलछि ओके सो एटा होछि 10 मिक संख्या एटा होछि होल नंबर हमको डेटा रे तळे काम करछ हमको डेटा एई टाइप रो डेटा भी स्टोर करिया पड़ परबे राइट यस और नो डेसिमल डेटा भी डील करिया होल नंबर भी डील करिया ओके so now this is called a text this is text these are called numbers again whole number and decimal number so when I say text देखो मु लिखले what is this numeric data ना text data Sir, both. so it is both no एटा को text data को okay text or string कहबो because already three mix हेगला it has alphabet plus numeric plus एटा होछ गोटे स्पेशल कैरेक्टर alphabet अच्छी numeric अच्छी special character अच्छी this is called text data or string data okay मु कहर गोटे एड्रेस लिखुची एबे मते कह एटा सो यूएस रो नंबर ए टाइप रो गोटे केमते रुहे so you cannot consider it as a number तमे एटी ट्राई करो एटा को नेकरी प्लस करिकी एमतिया गोटे नंबर ऐड करि परिबो एतिरे तमे अरिथमेटिक ऑपरेशन करि परिबो एमतिया नंबर रे No, sir. it is not possible try it in excel also excel में try करके देखो डेटा नंबर में पका ऐड करो it will not happen so now when you have a value which is a combination of special characters hyphen space with a number then it will be treated as a text value or it will be treated as a string value it is no more a numeric value जेतोल आमर नंबर में प्रेजेंट करछे +91 okay 973651234 it's a text value it's no more a numeric value because by using this number I cannot perform so भले बेले बेले कोन हुए हमको डेटा रो टाइप टा को टेक्स्ट ने करी नंबर को स्टोर करे पड़े काहे कि ना सेमित ही हमको मोबाइल नंबर को ऐड करिया को पड़े नहीं राइट मोबाइल नंबर हम कोन हुए कैन यू गिव मी सम ऑफ 5 मोबाइल नंबर्स what is the highest number what is the lowest number we don't perform any arithmetic operations on a mobile right so सेति पे कि मोबाइल नंबर टा बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही नहीं आ जाए तार डेटा टाइप हम डिफाइन करे टेबल क्रिएट कला को वी विल हैव टू डिफाइन इट एज अ टेक्स्ट वैल्यू बिकॉज़ एठी हमें किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन करियार स्कोप ही नहीं न्यूमेरिक वैल्यू ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन कराबो स्टूडेंट मार्क्स एम्प्लॉय सैलरी
ओके एई सब जिंस ऊपर तुम कर परिबो एम्प्लॉय बोनस क्वांटिटी प्राइस आ ऊपर तो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन न्यूमेरिक ऑपरेशन कर परिबो वी कैन नॉट परफॉर्म इट ऑन अ टेबल दिस वन सो इट इज अ टेक्स्ट वैल्यू नाउ ओके जेहेतु गोटे स्पेस भी रुहे प्लस भी रहला इट्स अ टेक्स्ट वैल्यू इट्स अ टेक्स्ट वैल्यू इट्स अ टेक्स्ट वैल्यू नंबर माने दिस वन क्लियर अंडरस्टूड Yes. Yes, sir. Yes, sir. A data mostly deal करे then we also deal with date and time, right? It is बहुत important. Yes or no? को टाइम रे ऑर्डर प्लेस होला को डेट रे प्लेस होला को टाइम रे प्लेस होला केते सेकंड रे मिली सेकंड रे Amazon देखुथिबो ओके मोर प्रति सेकंड रे केते ऑर्डर प्लेस होची प्रति मिली सेकंड रे केते ऑर्डर प्लेस होची बिकॉज़ इट्स माने सबुठु बड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्लोब रे सबुठु बड़ प्लेटफॉर्म राइट तो ताको डेट भी मैटर करे इवन जेतले पेशेंट एडमिट होची ताको डेट कैप तार डेट कैप्चर होची न्यू बेबी रे बर्थ टाइम दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट राइट दैट इज आल्सो कैप्चर्ड डेटाबेस रे टेबल रे एसबो इंफॉर्मेशन भी डेट टाइम ओके दिस categorical data numerical data everything gets captured right so ei सब data ଆମେ basically ଯେତେବେଳେ table create କରିବା ei ସବୁ data ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା we have to deal with such type of data so clear Yep. Yes. Yes. okay any questions कार किसी question ଅଛି whatever we have covered today anybody has any questions any questions No, sir. All clear. No, sir, no. No, sir. No, sir. so I'll quickly walk you through the SQL slide so should I continue or should I we stop now कंटिन्यू करें ना आज पे स्टॉप करें सर कंटिन्यू करिबा Continue. okay now Continue, sir. okay so now SQL I'll quickly walk you through the SQL slide सब तो मैं already explain कर दिली but still I'll walk you through quickly so SQL stands for structure query language everybody knows this already okay so IBM रो दुईटा रिसर्चर आको डेवलप करथिले around 1970s रे okay these are research scientists आको डेवलप करथिले SQL language को initially it was called as SQL structure English query language okay एबे एटा कहउछन्ती SQL बहुत जण SQL भी कहन्ती so don't get confused SQL माने same SQL को कहउछन्ती SQL okay SQL कहन्ते SEQL structure English query language. SQL is a language for relational databases. What is relation? I'm the database problem. What is relational databases? I'll explain you. Don't worry. So SQL allows user to communicate with the relational databases. SQL is a language which is used to store, retrieve, manipulate data. Okay. SQL is most widely used commercial relational database language. जेते database management system अछन्ते तांकर गोटे ही language that is SQL. That's it. Okay. Some जेमति किछटा database management system software हेले SQL Server, Oracle, MySQL, IBM DB2, PostgreSQL, okay, Sybase, MS Access. It has been again categorized in 5 sub-languages, that is data definition language, data manipulation language, data query language, transaction control language, data control language. I will explain you each and every sub-languages of SQL. Okay. Now, the simple pictorial representation. Okay. So now when I say relational databases, so I'll ask you one thing. So can you look at my screen clearly? Do you have clear visibility on this table data? Yes, sir. yes sir So what is the department name of Suraj? What is the department name of Suraj? Sir, TCS. Yes. Finance department. The finance.
Finance. So ଟିକେ finance, ଭଲସେ ଦେଖିକି କୁହ, Finance. ଭଲସେ ଦେଖିକି କୁହ, ସୁରଜର Sir, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍। IT. IT department. so finance, ସୁରଜ Finance Department. department. sir, finance. ଫାଇନାନ୍ସ, ଏବେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ। IT. No, sir. ଆର IT. ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଡି, ଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ IT. ଆଇଡି କଣ? Achha, IT, IT department. 12, 12 is IT representing. department. Okay, so now एमती टेबल रे ना बहुत सारा डेटा एमती लिंक था. Okay, so now there is a see, so relational database is a collection of tables to store same database. जहाँ relational database definition is same, but in relational database tables can be related to each other. Tables are usually related to each other by a primary key and foreign key. A concept ଆମେ ପରେ ପଢିବା, ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି. ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଆର ଦିଟା ସେସନ ଲାଗିବ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ. ଓକେ, ତାମାନେ each table ଯେମିତି multiple tables are related to each other. ଓକେ, ମାନେ ଯେମିତି କଷ୍ଟମର ଟେବୁଲରେ କଷ୍ଟମରର ଡେଟା ରହିଲା. ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଟେବୁଲରେ ତାର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଡେଟା ରହିଲା. ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟେବୁଲ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଡେଟା ରହିଲା. କୋଉ ଟାଇପର ଆକାଉଣ୍ଟ, କାରଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ 5 ଆକାଉଣ୍ଟସ ଇନ୍ ଅ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାଇଟ୍? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିବ, ଗୋଟେ ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ହୋମ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବ, ରାଇଟ୍? ପାଞ୍ଚଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରୁଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର, ରାଇଟ୍? ସୋ କଷ୍ଟମର ଟେବୁଲରେ କଷ୍ଟମର ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଲା, ମାଷ୍ଟର ଡେଟା ରହିଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଟା ରହିଲା, ଯାହା ସେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ କରୁଛି ସେଟା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଟେବୁଲ ରହିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଚେକବୁକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଚେକବୁକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ, ତା ଭିତରେ ଚେକବୁକ୍ ର ନମ୍ବର ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା. ସୋ ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ଡେଟାବେସରେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ ରୁହେ. ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ତୁମେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ. ଷ୍ଟୋର କଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ वी विल सी, वी विल डिस्कस इट इन द लेटेस्ट स्टेज. ओके, लेटेस्ट स्टेज रे हम डिस्कस करिया. बट गोटे डेटाबेस रे बहुत सारा इनफॉरमेशन रहबो. यू विल बी सरप्राइज टू नो आई वाज वर्किंग फॉर, मो एसबीआई रे काम करथिली, माने टीसीएस रे काम करथिली. एसबीआई तला मोर क्लाइंट. ओके, एसबीआई मुंबई लोकेशन रे काम करथिली. आमे करथलु जो कोर बैंकिंग रे तुम जो ब्रांच रे जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर चलसी एई ब्रांच रे मो काम करथिली. आई वाज वर्किंग इन डिपॉजिट मॉड्यूल, डिफरेंट टाइप रो डिपॉजिट मॉड्यूल रे मो काम करथलु. एईटा थिला मोर फंक्शनल एरिया. सो एथिरे माने आमे तो हार्डली आई वाज डीलिंग विथ हार्डली लाइक 30 30 ରୁ 40 टेबल संगे मो काम करथली मैक्सिमम. ओके, बट स्टेट बैंक रो जे हमर गोटे मीटिंग हेतला, जण आर्किटेक्ट थिले. आर्किटेक्ट कहले कि इन कोर बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ जेते सारा फंक्शनालिटी अछि, लोन, डिपॉजिट, इंटरनेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, जहाँ सब अछि एई डेटाबेस रे 5000 प्लस टेबल्स अछि, 5000 प्लस टेबल्स अछि. 5000 टेबल्स अच्छी गोटे सॉफ्टवेयर रे डेटाबेस रे मेंटेन करा होची. को टेबल रे डिफरेंट, कोडी फोन बैंकिंग रो डेटा जाउची, कोडी इंटरनेट रे जाउची, कोडी मे बी यूपीआई रे जाउची, कोडी इंटरनेट डिफरेंट टाइप रो डील माने बैंक रो डेटा जाउची. सो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स अच्छी, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी रो डेटा सेटिंग पास होची. 5000 टेबल्स. Okay, but I was hardly working with this 20-30 tables or 40 tables max. Okay, something good a database management system रे, when you create a database, let's say तमे गोटे स्कूल पे सॉफ्टवेयर बनाउची, कॉलेज पे सॉफ्टवेयर बनाउची, ताकर मिनिमम 40-50 टा कम से कम टेबल थिबो, गोटे दिटा टेबल नथिबो. बहुत सारा इंफॉर्मेशन होची स्कूल विषय. सो लेट्स से बैंक पेमेंट का को करूची, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूची, वेंडर पेमेंट करूची. ओके, देयर आर डिफरेंट ताकर बैंक रो निजर किछि रहउची. ओके, से माने निजर ट्रांजैक्शन करथि, आरबीआई को डेटा दउचुनी. So there will be a lot of गोटे टेबल थियो खाली रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन थियो, गोटे टेबल थियो ओनली 1 crore ऊपर जो ट्रांजैक्शन, कारण ब्रांच रे जो नेटवर्थ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अछंती, बहुत ही रिच पीपल, सपोज जहां को अकाउंट जोटी 1 crore ऊपर ट्रांजैक्शन आ गोटे टेबल को एंट्री पड़े जो 1 crore एंड अबव ट्रांजैक्शंस, कारण सेगुडा सब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कराबो डेली. लेट्स से आज का डेट रे मो ब्रांच रे 20 टा ट्रांजैक्शन एमती हेची, मते 1 crore ऊपर ट्रांजैक्शन काले सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हेतु किछि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हेतिबो, मते आरबीआई को रिपोर्ट करिया पड़ियो से ट्रांजैक्शन ट्रैक करिया पे के. ओके, सो सेति पे कि गोटे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रे अंडर अ डेटाबेस देयर कैन बी मल्टीपल टेबल्स. और टेबल भीतर लिंक क्रिएट हेते, कारण जदि तुम लिंक क्रिएट करबो ना बहुत सारा डुप्लीकेट एंट्री हे जिवो, से ट्रैकिंग एटी हे परबो. ओके, सेति में कि लिंक क्रिएट हेता. वी विल डिस्कस इट गोइंग फॉरवर्ड. हम ए सब कांसेप्ट पढ़िया डिस्कस करिया. ओके, सो नाउ रिलेशनल डेटाबेसेस ऑल क्लियर. बेसिक आइडिया लागला. रिलेशनल डेटाबेस मीन सेम डेटाबेस, बट एटी जो टेबल्स अछंते दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. क्लियर? Parent child. Yes. Yes, sir.
Okay, now SQL is ANSI standard. What is ANSI? Can anybody tell me what is ANSI? No ChatGPT, no Google. SQL is ANSI standard. Can you tell me what is ANSI? Anybody has any idea about ANSI? এইটা জানিছো ইন্ডিয়ারে এটা জানিছো এটা জানিছো have you ever heard of this Yes, sir. Yes, sir. कौन पे आ रही what is the use of this कौन पे use करो The quality check. yes quality check okay quality check ସେମାନେ ISI ମାର୍କ ଲାଗିଲା ISO ଲାଗିଲା ତାପରେ ତମେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ୟୁଜ କରିବ ରାଇଟ Yes, ଯଦି sir. ISI ନଥିବ obviously you cannot trust the product କାଲି ଗୋଟେ କୁକର ନେଇ ଆସିଲ ଓକେ କେହି ତାକୁ ୟୁଜ ହିଁ କରିବେନି there is always a risk involved in it because ISO ISI ମାର୍କ ନଥିବ ISO ସାର୍ଟିଫାଇଡ ହେଇନଥିବ ओके तो ସେଥିପାଇଁ କି ସେମିତି ସଫ୍ଟୱେରରେ ବି this has to be certified by an organization এটা হচ্ছে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিट्यूट ओके सो एसक्यूएल ମୁଁ ବନେଇଦେଲି ମୁଁ ଡେଟାବେସ୍ ବନେଇଦେବି କାଲି ମୁଁ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମୋଠୁ ନେଇଗଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓକେ ସିଏ ଯଦି କୋଉଠି ଫସିଲା ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ତାର ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ହେଇଯିବ ନା ओके ଯଦି एसक्यूएल से सो आई हैव डेवलप्ड दिस वन टू स्टोर द डेटा ସେମାନେ ଡେଟା ଷ୍ଟୋର କଲେ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ କାମ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମେ ବି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଏସବିଆଇ କଥା ଭାବ ଏସବିଆଇ ହାଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 100 crores ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 100 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେ ବି ବହୁତ ସାରା ୱେଲଫେୟାର ତମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ପଇସା ଆସିବ କ୍ୟାଶ କ୍ରେଡିଟ୍ ହବ ओके से सब अकाउंट खोला है कोटी कोटी अकाउंट खोला है जदि मो डेटाबेस सेतिकी परफॉर्मेंस जदि सेतिकी एफिशिएंट नथिबो दैट इज अ परफॉर्मेंस इश्यू डेफिनेटली डेटाबेस क्रैश हेले बैंक बंद हो जिवो बैंक बैंकरप्ट हो जिवो बंद हो जिवो टोटल सिस्टम क्रैश हेगला बैंक बंद सिंपल डेटा रहबन माने डेटा केम चले कार अकाउंट केते बैलेंस थला कोन तो जानि परिबे राइट तो सेति मैं जोटा सॉफ्टवेयर बने देबे केही ताको यूज करिवे ओके सो माने ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोब रे इतने डेटा मैंने मैनेज करे माने इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय और इट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन सो आंसी हूँ गोटे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यूएस रे बड़ बड़ कंपनी मैंने बैक करती माइक्रोसॉफ्ट गूगल बहुत बड़ बड़ एटीएनटी बेल लैब्स करी जो ओके सेमन सब सपोर्ट करती कारण एमानकर काम होची रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती एई सब सॉफ्टवेयर नुआ नुआ सॉफ्टवेयर को सेमाने सब माने सर्टिफाई करती बा स्टैंडर्डाइज करती सो दैट थरे माने सर्टिफाई स्टैंडर्डाइज कला माने ताकू क्लाइंट माने यूज करि परिबे सो दैट जदि किछि प्रॉब्लम होला आंसर टीम ताकू सपोर्ट करिवो फ्यूचर रे ସେମାନେ ତ କନଫିଡେନ୍ସ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ କି ନାଇଁ ୟେସ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗो ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ସଫ୍ଟୱେयर ଏଭରିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଜମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍ କୁ ଦିଟା ରିସର୍ଚର ଡେଭଲପ କଲେ ଓକେ ଦିସ୍ ଆର ଛୋଟ ମୋଟ ସିଣ୍ଟାକ୍ସେସ୍ ଛୋଟ ମୋଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ Fine. So SQL जो data research scientist develop कले तापर it has to be certified by one organization. Okay, आंशिक जो organization आपको certify कला परे तापर Microsoft तार निजर database develop कला Oracle तार निजर DBMS system develop कला okay by using this language okay okay so clear सो ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କି ନା ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ କରିଦେଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଡେଭଲପ କଲା ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଭର ओराकल रो प्रोडक्ट ना होची सेम ओराकल कंपनी ना होची ओराकल कॉर्पोरेशन तार जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ना भी ओराकल कंपनी ना ओराकल यार ना ओराकल प्रोडक्ट ना ओराकल यार होची कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ओके आईबीएम सेमते डीबी2 वर्क कला आईबीएम रो डीबी2 एमती बहुत सारा प्रोडक्ट अच्छे कि एमान सब पॉपुलर एमान को मार्केट रे बहुत बहुत सारा क्लाइंट एई प्रोडक्ट गुडा यूज करते माने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी ओराकल रो प्रोडक्ट यूज करते क्लियर Yes, any sir. questions any questions here तो ये माइक्रोसॉफ्ट फुल रो फॉर्म प्रोडक्ट ଅଛି କି माइक्रोसॉफ्ट हाँ हाँ
सर आंसी रो कौन फुल फॉर्म अछि कि American national के पचारिबेनी यार सेतिक इम्पोर्टेंट हेतले मुझे स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट एटा तमर खाली नॉलेज पेन केला तमे एटा गूगल रे सर्च कर देखियो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ओके नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड स्कूल रे बहुत किछ कांसेप्ट कवर करिया को ओके सो दीस आर ऑल बेसिक्स okay so microsoft ro product hela microsoft sql server which is rdbms relational database management system this one is also same thing rdbms so can you guys tell me if I ask you one question what is the difference between sql and ms sql server it is an interview question who can answer me this question what is the difference between sql and ms microsoft sql server what you have understood so far SQL होच गुटे language, right? Okay. सर Sir, दूसरा MS वाला SQL is a database RDMS data database. Yes. एटा होच data गुटे सॉफ्टवेयर एटा होच गुटे सॉफ्टवेयर स्थित करेक्ट आंसर ओके सो SQL is a language MS SQL server is a software or it's a RDBMS which uses SQL to talk to the database to interact with the database संगे interaction करिया पे कि SQL server यूज करा जाए so first होची SQL is a language MS SQL is a RDBMS, a database management system, relational database management system, which uses SQL to interact with database. SQL is a language, MS SQL is a DBMS software which uses SQL language to interact with the database. It's a common question. Do you know the difference between SQL and do you know the difference between SQL and Oracle? So SQL simple. SQL is a language. Oracle is a DBMS software which uses SQL to interact with the database. SQL language, Oracle are DBMS software. All clear? yes sir What is the difference between SQL and MariaDB? What is the difference between SQL and IBM DB2? Okay, it should be clear. Any questions so far? Anybody has any questions? no sir So let's jump to the next slide. Okay, so it is summarized here. SQL is an ANSI standard language. Many vendors developed their own database management system on it. TSQL is a Microsoft. See, it जो तुम देखिलो TSQL. So Microsoft रो product है Microsoft SQL Server. से जो SQL टाको Microsoft use करुची तार ना होची से दे देची तार TSQL. TSQL होची Transact SQL. Oracle है PLSQL. Okay, PLSQL होची procedural language okay and SQL এটা হলো transact SQL আমানে কোন সিম্পল सी MS SQL सर्वर कोन कला नॉर्मल SQL की यूज कला सेतिरे SQL रे प्रोग्रामिंग आगुर करियो नथिला ओके MS SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एतिरे किछि प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी SQL रे प्लस किछि प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी ऐड कला आउ किछि नुवा फीचर्स ऐड कला नुवा फंक्शंस नुवा फीचर्स ऐड कला पर तार ना से दिला TSQL Oracle दे दिला PLSQL okay so see I mean, we all are speaking Odia language. We all know Odia language. Okay. But let's say on Bulre, put a different style of speaking with local accent. Baleswar re put a different style of speaking Bhadrak re alga achi Mayurbhanj Odia take different right tankara local flavor take add hiki says kuhandi right yes or no ki Berhampur re with Olankar right yes or no clear. So Odia, we all know this language, but different jagare tar accent, tar
মানে লোকাল ফ্লেভর ডেফিনেটলি আড ହୁଏ লোকাল ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଡ୍ ହୁଏ ସେମିତି ଏସକ୍ୟୁଏଲ ହଉଛି ଗୋଟେ କମନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ତ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଟିଏସକ୍ୟୁଏଲ କହିଲା ଓରାକଲ ଆଡ୍ ହଉଛି ପିଏଲଏସକ୍ୟୁଏଲ କହିଲା କ୍ଲିୟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ କାରଣ ଏମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆଡ୍ କଲେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରି ହେଉନଥିଲା ଆଗରୁ ନାଉ ଦିସ୍ ପିପଲ ହାଭ୍ ଆଡେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଇନ୍ ଇଟ୍ ଓକେ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର ଆଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ସେମ୍ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଦେयर ଇଜ नो डिफरेंस ଦେଖିବ you can clearly understand SQL is an ANSI standard database language. Many vendors developed their own DBMS based on it. TSQL is Microsoft's proprietary extension to SQL. Say SQL ର TSQL ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ କାହିଁକି ନା SQL ସେ କ'ଣ କରିଛି SQL କୁ କ'ଣ କରିଛି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କନସେପ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଛି ଲୋକାଲ ଭେରିଏବଲ୍ସ ଭେରିୟସ୍ ସପୋର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ସ we will cover this. ଓକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ TSQL ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି बहुत सारा किसी फंक्शनालिटी ऐड कला पर इट हैज बिकम TSQL ओराकल भी सेही जिंस करछि सेम SQL को लेछि सेतरे किछि एडवांस कांसेप्ट ऐड करछि किछि वेरी प्रोग्रामिंग कांसेप्ट ऐड करछि किछि सपोर्ट एडिशनल फंक्शनालिटी किछि ऐड करछि ओके दैट हैज बिकम PLSQL ओराकल पे एटा गेला PLSQL माइक्रोसॉफ्ट पे एटा गेला TSQL बट इट इज द सेम SQL प्लस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी प्लस डेट प्रोसेसिंग ପାଇଁ କିଛି additional ଜିନିଷ add function ଅଛି okay string processing ପାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି add ଅଛି what is date processing what is string processing you will not understand today going forward slowly you will understand what it is all clear or Yes. any questions so SQL ର କାହାର କିଛି question ଅଛି କୁହ so if so guys is there anyone who is finding actually difficulty or facing difficulty which बुझियार किसी challenges होची so feel free to share your feedback का कुछ बुझियार issue होची किसी problem होची कि बुझी पारनो No, sir. all clear right Yes, sir. okay so in the next session I'll ask some questions so be prepared I'll share this PPT with you okay share the recording PPT so next session will be on Monday then I will ask some of the questions from the topics which are covered okay Okay, sir. ठीक ଅଛି Okay, sir. okay then ठीक है, sir. any ଯଦି କିଛି question ଅଛି ପଚାର otherwise we can wind up the session for today okay so I'll take it as no so thank you everyone for joining good night Thank you, sir. Thank Good you, night. sir. Thank Good you, sir. night. Good night, Thank sir. you. Good night. Good night, sir. good night